Welcome guys to my channel Study for Social Studies. सॉरी फॉर डिलेइंग। बहुत दिनों के बाद वीडियो जा रहा है। मैं थोड़ा बिजी था अपने काम में, एग्ज़ाम था, मैरिज था। सो चिल्ड्रन, नाउ we are going to start the history of NCERT of Standard 6. So the first chapter of history of NCERT Standard 6 is what, where, how and when. So you can look here at the top of the page. There is one paragraph, that is Radha's question. What is written in this question? So Radha was asking that she has she has some questions, like when she was reading a newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, वो सोच के सरप्राइज्ड हो गई कि कुड एनी वन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, कि क्या कोई आदमी कैसे बोल सकता है कि 100 ईयर्स पहले क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दैट टाइम, इन एंशियंट टाइम, साइंस वाज नॉट सो डेवलप्ड एट दैट टाइम। देयर वाज नो कैमरा एंड नो वीडियो, ये सब कुछ नहीं था। फिर भी हम लोगों को कैसे पता चलता है? नाउ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper, ये सब last year, ask somebody who remembers. But what about long long ago? हम लोग का yesterday, 1 year ago, 2 years ago, maximum 5 or 10 years ago, or we have some memories about the childhood. But long long time ago, like 100 years ago, 1000 years ago, what happened during a certain time, ये हम लोग को कैसे पता चलता है? ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब कुछ पता चल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अगर चाहे तो पता कर सकते हैं कि लॉन्ग ईयर्स एगो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम और ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट। लाइक लॉन्ग टाइम एगो व्हाट वाज द फूड हैबिट ऑफ द पीपल, लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दैट दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव, ये सब चीज़ें, किस तरह का कपड़े पहना करते थे, उनका कस्टम्स क्या था, उनका कल्चर क्या था, वो लोग क्या किस तरह के हाउसेस पे रहते थे। सो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स दैट द चिल्ड्रन प्लेड। पहले के बच्चे जो लोग जो खेला खेला करते थे, वो सब भी हम जान सकते हैं। द स्टोरीज दे heard, द plays दे saw, द songs दे sang. नाउ ये सब पता करने का एक तरीका है, वो लोग हम जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। इसके बाद मैं जो टॉपिक पे आऊँगा वो है वेयर डिड द पीपल लिव। दैट मीन्स हम लोग अभी रहते हैं टाउन्स पे और विलेजेस पे, हम लोगों का घर है, सम देवर सम ब्रिक हाउसेज, दैट मीन्स पक्का हाउसेज, और कच्चा हाउसेज, दैट वी से द हार्ट्स, कच्चा हाउसेज मीन हार्ट्स मेड बाय द मड and straw and bamboos, and the pakka houses, that means permanent houses that are made by cement, rod and some modern things like glass, etc. Now find the river Narmada on the map 1. Now look at the map 1 very carefully. Here you can see it is the map of ancient India. Okay, ancient India is the map of ancient India. हमारा इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा है, कैसा लगता है नाउ इट इज़, हाउ इट लुक्स लाइक। बट एंशियंट टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ है बहुत बार, नॉट ओनली द पार्टीशन ऑफ 1947 व्हेन द पाकिस्तान वाज मेड, इससे पहले भी सो मेनी टाइम सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज डिटैच्ड फ्रॉम आवर मदरलैंड। लाइक before the partition of 1947, Afghanistan was detached. After that, Nepal was detached, Bhutan was, Tibet was detached, Bangladesh, after that, Bangladesh was detached in 1971 after the Pakistan. Then Myanmar was detached. So these are all countries, and even it is says that Iran was also a part of India. So it is the map of the एंशियंट इंडिया। इस मैप के साथ हमारा जो मॉडर्न इंडिया का मैप है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। नाउ आई एम शोइंग यू वेयर इज नर्मदा। लुक हियर एट द मैप very carefully. Here is the Narmada river. You can see here Narmada river. Okay. So people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. लोग पहले जो लोग होते थे वो
हमेशा से नदी के जो बैंक्स, जो रिवर बैंक्स है, वहीं पे रहते थे। इसका कुछ फ़ायदे थे। क्या फ़ायदे हैं हम लोग जानेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स मीन्स गैदरर हंटर्स, वी नो अबाउट दैट। एट that time, in ancient times, people don't know, human beings don't know how to produce the crops. Then they were dependent for their food on gathering and hunting. Okay, that is, people who gathered their food, they knew about vast wealth of plants in surrounding forest and collected roots. वो लोग क्या करते थे, जो plants थे उनका जो roots थे वो collect करते थे, fruits collect करते थे, and forest में जो other चीज़ें मिलती थी like honey and various type of things that have values to them, वो लोग वो find out करते रहते थे for the living, बचे रहने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो लोग जानवर का शिकार भी करते थे, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स का रूट्स और फ्रूट्स खा के तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। वो लोग तो क्रॉप्स प्रोड्यूस करना जानते नहीं थे, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन द एनिमल्स ऑल्सो, दे हैव टू डिपेंड ऑन द हंटिंग ऑल्सो। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब अगर आप लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको सुलेमन एंड किरथर हिल्स मिल जाएगा। कहाँ पे है सुलेमन एंड किरथर हिल्स? Here you can find the Suleiman and the Kirthar hills. Look here, you can see here the Suleiman. Okay, yeah, the Suleiman hills, and you can Kirthar hills is here beside the Suleiman hills. This is the Kirthar hills. Okay, now some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. जो हम लोग जो फॉसिल, आपको पता ही है फॉसिल क्या होता है, ठीक है? तो जो एंशियंट क्रॉप्स है उनका फॉसिल, जो व्हीट एंड बार्ली, ये ड्यूरिंग अबाउट 8,000 years ago, first people tried to produce crops, and those crops were wheat and barley, and the fossils of those crops were found in this area. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in village. And this not only producing crops, they also started to rearing animals. Rearing means पालना। वो लोग sheep, goat, cattle, various types of cattle, इनको पाल रहे थे। And they started to live in villages. वो लोग गांव बना लिए और रहने लगे वहीं पे। Locate the Garo hills in the northeast and Vindhyas in the central India. Now look at the Garo hills. Here you can find the Garo hills, and you can find the Vindhyas in the central India. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ? These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. Vindhyas का जो north है, जो विंध्या हिल मैंने आपको दिखा, उसके north में, उसके पूरब में first rice was also produced first. Okay, ठीक है? So for today, this much. And what do you learn by this? So that not only several years, but if we try, then we can find the in some incidents of so long times, and we know a little about what can we know about the past. We can know about the ancient people were the hunters, they were the herders, they were the farmers, they were the rulers, merchants, and how they lived, what type of clothes they wear, what type of food they ate. These things we can know. And we know about that where the first crops were grown, like wheat and barley, that were grown at the bank of Narmada river. They were grown at the Suleiman, in the Suleiman and Karthar hills, and the first rice was grown in Bindya hills. So these things that we know, and after that, in the next video, we will discuss about the next topics. Thank you very much.